हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज फॉर ऑल। आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट डिसीजन डिस्कस करेंगे ऑन पॉक्सो, विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. This video is a part of our series of top 100 judgments for CLAT PG 2026. Now, why this case is important for CLAT PG 2026? क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स में रहा है, बिकॉज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 2024 के डिसीजन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा है. सो दैट्स हाउ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आती है, सो दैट इज़ हाउ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो अब हमें देखना है कि हमें क्लैट पीजी के हिसाब से इस डिसीजन में क्या पढ़ना है. एक तो वी विल हैव टू सी व्हाट वर द फैक्ट्स. सेकेंडली, व्हाट वर द लीगल प्रोविजंस दैट वर इन्वॉल्व्ड. thirdly, we will see what cases has the court relied upon. And fourthly, we will see what directions were given by the Supreme Court to various authorities like the union government and others. So that's how we will see what all happened in this case. Now, before starting with the decision, let us see the facts of the present case. So there is a victim. She is a 14-year-old girl. This 14-year-old girl, she leaves her parents' house and she goes to the accused's house on 20th May 2018, and she starts living together with him because victim और accused का love affair होता है. And she leaves her parents' place and she goes to the accused house and they both start living together. 8 दिन बाद विक्टिम की मदर को पता चलता है कि विक्टिम अक्यूज के घर में रह रही है. सो शी लॉजेस एन FIR ऑन 28 May 2018. अकॉर्डिंगली 1 जून को जो IO होते हैं इस केस में, दे ब्रिंग द विक्टिम फ्रॉम द अक्यूज हाउस टू द पेरेंट्स हाउस. अब 1 साल तक विक्टिम अपने पेरेंट्स के घर पे रहती है, बट वहाँ पर शी इज़ अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ हर मदर. अगर ट्यूशन जाना है तो मम्मी साथ में जाएंगी, स्कूल जाना है तो मम्मी साथ में जा रही हैं, तो वो 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी. एंड सोसाइटी प्लस उसके सिबलिंग्स प्लस उसकी एक्सटेंडेड फैमिली उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हाउ कैन यू जस्ट गो एंड स्टार्ट लिविंग विद सम पर्सन हु इज़ सो एल्डर टू यू. सो दैट्स हाउ उसे कॉन्स्टेंट रिडिक्यूल फेस करनी पड़ रही थी फ्रॉम द सोसाइटी. तो 1 साल तक तो वो बेचारी ये सब झेलती है, बट 1 साल बाद वो फिर से अपने पेरेंट्स को छोड़ के अक्यूज के घर में रहने चली जाती है. एंड सिंस देन दे बोथ हैव बीन लिविंग टुगेदर. नाउ बिकॉज ऑफ द FIR दैट वॉज फाइल्ड इन May 2018, this accused is arrested in December 2021 आफ्टर अ डिले ऑफ ओवर 3.5 years. और जब उसका अरेस्ट हुआ उस टाइम पे द विक्टिम एंड द अक्यूज्ड हैड अ बॉय ऑल्सो, हैड अ बेबी बॉय ऑल्सो. ही वॉज अराउंड 8 months old. I am not sure if it was a boy or a girl, but there was a child that was born to the couple. So now this accused gets arrested on the basis of the FIR filed by the mother in the year 2018. अब यहाँ पर क्या होता है, दैट विक्टिम शी हैज़ बीन अबैंडन्ड बाय हर ओन फैमिली. शी इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली रिडिक्यूल्ड बाय द सोसाइटी. और उसके ऊपर से जो हस्बैंड, जो उसका इकलौता सहारा है, उसे भी पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है. सो शी गोज़ टू अ लॉट ऑफ लॉयर्स एंड शी रिक्वेस्ट द कोर्ट कि उसके हस्बैंड को, विच वॉज द अक्यूज्ड इन द प्रेजेंट केस, उन्हें रिलीज कर दिया जाए. बट द जुडिशरी कैन नॉट गो अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ लॉ. दिस रेप इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. इट इज अ स्ट्रिक्ट ऑफेंस. इट कैन नॉट बी कंपाउंडेड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज. Accordingly, the trial court convicts the accused under Section 6 of the POCSO, which provides for the punishment of aggravated penetrative sexual assault,
Secondly, the accused is convicted under section 76 subsection 2n and section 376(3) of the IPC that talks about rape and rape of a child below 16 years and the relevant sections of kidnapping and abduction. Now, for the same act, the accused is convicted under POCSO also and under IPC also. Is it allowed? Yes. Why? Because section 42A of the POCSO says that this act, that is the POCSO, it is in addition to and not in derogation of any other law that is provided. So ये एक additional act है and it is not meant to overpower any other law that is already there. So accordingly यहाँ पर कोर्ट ने दोनों एक्ट्स में अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया. Now against this trial court decision, this accused moves towards the high court. अब हाई कोर्ट यहाँ पर अपनी 482 CRPC की पावर्स यूज करके which talks about inherent powers and Article 226 which talks about supervisory powers of the high court, इन दोनों पावर्स को यूज करके अक्यूज को एक्विट कर देता है on the basis of the following grounds, which is victim was disowned by the family, she continued to live with the accused and her child was fathered by the accused. और साथ ही accused को एक्विट करते हुए the court gives some controversial statements जिसकी वजह से कोर्ट स्क्रूटिनी में आया of the newspaper articles. कोर्ट ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी लाइक द adolescents should control their sexual urges. Basically the court was trying to do moral policing. इसलिए बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स ने एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो they took the suo motu cognizance and they criticized that the high court or any other court should refrain itself from doing moral policing. आपका काम सिर्फ डिसीजन देना है, आपको ऐसे बेफालतू की मॉरल पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए. सो दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिड. सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, एक तो जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है they files a criminal appeal in the Supreme Court, and secondly the Supreme Court took suo motu cognizance, and finally this matter reaches the Supreme Court. तो यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले चीज़ बोली कि हाई कोर्ट कैन नॉट क्वॉश अ पॉक्सो कन्विक्शन अंडर आर्टिकल 226 और सेक्शन 482 CRPC बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज और कोहैबिटेशन. वाई? Because rape as well as offense under POCSO, it is a non-compoundable offense. Compoundable offenses वो होते हैं जो section 320 CRPC में provided है. Rape does not fall under section 320 CRPC, and because it is a strict offense, it is a serious offense, it is a heinous offense against the society, तो आप इसमें क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट कंपाउंड द ऑफेंस. सो अकॉर्डिंगली द सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड, बट by using the inherent powers under Article 142 of the Constitution, which provides for the power to do complete justice. The Supreme Court suspended the sentence, and for relying upon this power, the court cited various decisions like Shilpa Sailesh versus Varun Srinivasan and K. Dhandapani versus State. Secondly, the Supreme Court deprecated the High Court's inherent powers. Like the Supreme Court said that the High Court cannot use its inherent powers in such a way कि वो legislature के mandate के against जाएं. अगर legislature ने ये चीज़ बोली है कि offenses like rape are non-compoundable, तो आप अपनी inherent power use करके उसे compoundable नहीं बना सकते हो. So that's how the Supreme Court deprecated the practice of the High Court. And thirdly, the issue was related to the right of the victim under Article 21. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी. इस कमेटी ने विक्टिम को एनालाइज करा, विक्टिम से बात करी, उसका इकोनॉमिक एंगल जाना,
उसकी फैमिली के बारे में जाना, उसकी सोसाइटी के बारे में डिस्कस करा, एंड दे केम टू अ कंक्लूजन दैट द विक्टिम वॉज सफरिंग इमेंसली. वाई? एक तो उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया, सोसाइटी में उसकी कॉन्टिन्यूस बदनामी चल रही है, ऊपर से आपने उसके हस्बैंड को भी अब अरेस्ट कर लिया है, ही इज़ ऑल्सो इन जेल. सो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड she being uneducated, how will she be able to take care of an 8 months old child? So the court held that the legal system has failed the victim. विक्टिम के हिसाब से she wanted कि जो accused, जो उसका हस्बैंड है, उसे रिलीज कर दिया जाए ताकि वो अपनी फादरली और हस्बैंड ड्यूटीज निभा पाए. So here the court took a humanistic approach and they reiterated the right of the victim under Article 21, which includes her dignity, her education, her mental and emotional well-being, and accordingly the court gave directions to the state to provide free education till graduation, and for the nutrition and shelter of the victim, and for the good schooling for her child, and the debt relief also. This debt was taken by the victim of around 2 lakhs. ये विक्टिम ने लिया था जब वो अलग अलग वकीलों के पास जा रही थी अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए. So the court passed all these directions in favor of the victim. Now another thing that the court analyzed was, is informed consent of a minor relevant in POCSO cases? हमें पता है कि POCSO में 18 years POCSO में और IPC में अगर चाइल्ड 18 ईयर्स से कम का है, सो हिज और हर कंसेंट इज इररेलेवेंट, राइट? सो हियर ऑल्सो कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अगर वो अपनी कंसेंट दे रहा है माइनर तो उसे क्वॉश कर दो. रादर द कोर्ट सेड दैट कोर्ट क्लियरली सेड कि हम लेजिस्लेचर के मैंडेट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम अक्यूज को कन्विक्ट करेंगे, but taking a humanistic approach we will suspend his sentence. So the law till today remains the same. The consent of a minor for a sexual intercourse is irrelevant, and the fact that she shared a romantic relationship with the accused is of no relevance. But in few cases, taking a humanistic approach, the court can come to a different conclusion. बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि कोर्ट ने तो अपनी आर्टिकल 142 का यूज़ करके सेंटेंस सस्पेंड कर दिया. बट व्हाट अबाउट द ट्रायल कोर्ट? व्हाट अबाउट द हाई कोर्ट? दे डू नॉट हैव एनी सच पावर्स टू सस्पेंड द सेंटेंस. थोड़ी सी लिमिटेड पावर्स माना 432 CRPC में है, बट स्टिल आर्टिकल 142 में एक कंप्लीट पावर है टू सस्पेंड द सेंटेंस, और कितने ही केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं. So that is a thing I personally feel that the legislature should consider this issue. They should make certain amendments to the law so as to take a more humanistic approach and to see that if the victim is maybe of 17 years or maybe of 16 years, और अगर वो अपनी consent के साथ एक sexual intercourse कर रही है, so and she says that she do not want any case against the accused, so maybe a more humanistic approach can be taken, and by legislature doing certain amendments, this issue can be sought in a better manner. So that is how the court interpreted this entire decision, and इसकी पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. You can download it from Telegram channel and you can read it. So that is all from my side. Thank you for watching.